Good morning, everyone. Can all hear me? Yes, ma'am. Good morning, ma'am. See the screen also? Okay. Let's start with today's class. Everybody, please mute your mics if there is background noise. So today we'll do a very interesting topic. Let me cover a very useful topic today that we can do through the Loshu grid. Okay, when you have two date of birth of the male and the female, how do we do the matchmaking between them? Now this can be matchmaking before marriage. Okay, when you are doing a comparative study of two Loshu grids. So it's a comparative study. One of the uses is matchmaking. Another can be any kind of compatibility match between two persons. Compatibility means how well do I get on with the other person, and when we both come together to do something, how can we both contribute to this partnership? ठीक है? आपसी तालमेल, आपसी सामंजस्य, आपसी आपकी कितनी समझ है इस रिश्ते को निभाने की? Now, traditionally, the Chinese literature only talks about matchmaking concept, like we have the Gun Milan in our Hindu Vedic astrology. But we will go a step further because we till at this stage now we have gone into the depth of each number and we understand what the power of each number is, what the qualities of each number are. So what happens when two people come together who have different date of birth? Will they get along well with each other? Will there be conflicts? What is the common area they have to work on, etc. So please take this as a matchmaking, take this as a compatibility. Compatibility can be between existing marriage partners like husband and wife. You can also do a compatibility check over there. Some people come to you, how do we improve our relationship? Okay. So then also you can do this. You can tell them exactly कि आप remedies जो है इस direction में कीजिए, इस planet की कीजिए, या फिर आप आपका ये वाले numbers जो हैं ये दोनों आपस में complementary हैं, so maybe you can do something to enhance these numbers. How do you improve the marriage? Why is your marriage the way it is? Suppose there is no love or passion, you can know instantly why there is no love or passion. Then you can give remedies for that, because now you know the numbers for everything, right? So that is a very powerful thing you have in your hand. So what do? We make the Loshu grid, and compatibility can also be between business partners. You can check between business partners. You can check between yourself and a client. How, you know, again, if it's worth it, like if it's, you feel that it is going to be, you want to make it meaningful relationship. You want to know how long it will last, whether there is more conflict than compromise. What is there basically? Kitna dam hai is rishte mein? Right? All those things you can check. You can check between parent and child, between two flatmates renting a flat together, like that also. जिसके साथ भी आपका interaction जो है वो close होता है, intense होता है, और एक दूसरे से आप लोगों को होने का फर्क पड़ता है. Simply put, are you affected by the presence of the other person? What that person is like? It can be anybody. Okay, you can do yourself and some other person. You can do between two strangers also. It's up to you. Now, this is the background. Now, how do we do this? In this particular first part of the lesson that I will explain to you, I will do the traditional matchmaking first, that you should know. How to do matchmaking when two partners or two persons are coming to you and they want to know, they want to get into a long-term relationship. Will it work out for them? What are the compromises necessary? Please understand, just like in the tarot spread, matching spread that we do, we tell them, we give them guidance. This is how you guys will improve upon each other, because many a times when people come to you, they already like each other. Either you will have one person coming and saying, listen, I have shortlisted 3 girls on shadi.com. These are the date of birth. Can you do my compatibility match with them? That is one case. Another will be boy and girl have already decided somewhere that they like each other. They just want to know what the future holds for them, how they can contribute, etc. They want an insight. Okay. So what we do is we take the male date of birth, we take the female date of birth, take both side by side, always. Right?
So first we make the male Loshu grid. Now in this particular example that we have here, the yellow one is the male. Okay, this is the male date of birth, and the pink one is the female. Now what do? We take the date of birth of both these two. Male here is this is a real example. Okay, this is a real example, and the boy and the girl somewhat know each other. They were colleagues actually. Okay, so that is why you will see boy is 92 born, girl is 91 born, but he was okay with the age gap. So now what do we do here? 26 March 1992, 17 September 1991. We calculate the basic also, and we calculate the life path. 8 here is the basic of the boy, 5 is the life path number. Everybody please make these grids in your notebook. Boy you take 26 March 1992, 26 March. Girl you take 17 September 1991. Okay, everybody please make this first. Now in the boy's case, what is happening here? We note down the basic and the life path also, because we have to put that into the grid. That is very important. It's a lifelong relationship, long-term relationship. So we take both. Now what do we do here? 2, 6. How do? We take out 2 here. Suppose in the case of boy we are doing here. So what are the numbers here? We take a 2. Okay, 26. So 2 is there, 6 is there. March ka 3 is there here. 3. 1992. So यहाँ पर आपको पूरा का पूरा date of birth मिलेगा. Okay, 199 and another 2 is coming here just by his date of birth. And this 8 is coming as the basic, and the 5 is coming as the life path. Okay, first step is to fill in all the digits of the date of birth, including basic and life path. Any other numbers you have, like the KUA number, attitude number, all those other numbers, name numbers, etc., they will all come under the grid. Please do not put them in the grid. Grid only has date of birth plus basic plus life path. Bas. Maintain the sanctity of the grid. It's important. Similarly, for the girl, we will put down 1. Okay, now see 1, 7, 17th, hai na? 17 September ka there is a 9 here coming. 1991. So another 1 is coming here, another 9, 9 and 1. Okay, then date of basic is 8 here. Again, basic is also 8, and life path here becomes 1. So we have another 1 here. Clear? Now this is called the natal Ank Kundali. This is called natal Ank Kundali. Natal. Natal means by birth. आपकी जन्म कुंडली क्या है? So this is the natal by birth. Okay, by birth means your date of birth के basis पे जो आती है. कुआ numbers नीचे लिख लीजिए आप लोग. आप इसमें pinnacle number लिख सकते हो. In fact, pinnacle will be needed. So what you can write down below. Let me just put down. So let me just write down here. You can write down KUA number. Okay, this is below the grid. Below. Okay, we are going to do a deep analysis of these two kundalis. So you should have this. Okay, below the grid. For both of them you can write. You can write the KUA number. That's important. Name number you should write. Mobile number is not so important here. KUA number is important. Name number is important. Then another thing is here you have to write is I just told you, what was it? Pinnacle cycle number. Okay, pinnacle cycle number. Okay, pinnacle cycle. And pinnacle cycle, try to write from which pinnacle that person has come and which pinnacle they will be going into. लंबा रिश्ता कर रहे हो ना, लंबा रिश्ता एनालाइज कर रहे हो, तो पीछे का क्या है, आगे का क्या है, you should know that. Don't just write the time. Write the entire course sequence. Years लिख लीजिए कि first उसके years इतने थे, pinnacle cycle number, write the years and write the numbers. Okay, for all 4. मैम इसमें हम चैलेंज नंबर भी इंक्लूड कर सकते हैं फॉर दिस ईयर, करंट ईयर, अभी कौन सा चल रहा है PYI, ठीक है, वो भी लिख लीजिए. इससे आपको एनालिसिस करने में बहुत हेल्प मिलेगी. रचिता मैम, कैन वी आल्सो इंक्लूड एंड स्टडी? क्या करना है,
अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा चाइनीज मतलब जो लोशो मैच मेकिंग है, उसमें जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है देखने का कोई भी चीज, वो हम लोग ने ये वाली अंक सारणी, दिस इज कॉल्ड एन अंक सारणी और अ कंपैटिबिलिटी टेबल बिटवीन टू पर्सन्स। ये इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले हम लोग ये चेक करते हैं, ये हम लोग करते हैं लाइफ पाथ नंबर के बेसिस पे, ठीक है। दोनों का लाइफ पाथ है हमारे पास। अब बॉय का कितना था 5 और गर्ल का था 1 लाइफ पाथ नंबर। अब हम क्या करेंगे, जो भी आपके पास आए हैं ये करवाने के लिए कंपैटिबिलिटी रीडिंग, उनका आप लोग वर्टिकल लाइन पे होल्ड करोगे, ठीक है। तो इस केस में द बॉय हैज कम टू अस, सो बॉय का है 5, तो हम यहाँ पर बॉय का 5 को इस वाले में होल्ड करेंगे और उसके अगेंस्ट हम दूसरे वाली यानी कि नंबर 1, इसका 1 हो गया गर्ल का, तो हमारा ये वाला बन गया, ठीक है। ये बॉय का हमने यहाँ पे होल्ड किया वर्टिकल में, डेस्टिनी नंबर में इसमें होल्ड किया, और हमने गर्ल का एलपीएन चेक किया, गर्ल का एलपीएन है 1। इनफैक्ट ये आप किसी को बता भी सकते हो, अगर किसी का बॉय का एलपीएन आपका 5 है तो आप उसको बता भी सकते हो कि जहां जहां पर ए आ रहा है, देखिए ए उसका और कहीं नहीं आ रहा है, किसी भी और नंबर के साथ नहीं आ रहा, तो एक्चुअली 1, अब कहते हैं ना रिश्ते भाग्य से बनते हैं, ये देखो 1 इसका ऑलरेडी, बिकॉज इनका कहीं ना कहीं पर देयर वाज अ स्ट्रांग अट्रैक्शन और देयर वाज अ somewhere you can say destiny was playing its role in bringing them together। अब इनके ऐसा नहीं है कि डिफरेंसेस नहीं है, नेचर में बहुत डिफरेंसेस हैं। ये जो हमें पता चलता है ये अंक सारणी देख के, ये डेस्टिनी नंबर्स मिलाए हुए हैं कि डेस्टिनी के हिसाब से, भाग्य के हिसाब से इनका रिश्ता कितना स्ट्रांग है। अब यहाँ पर हम ट्रेडिशनल टेबल पे नहीं जा रहे हैं, ठीक है। वो ट्रेडिशनल फ्रेंडशिप मत देखना, 1 and 6 का ये है, 4 and 8 का ये है, दैट इज वी आर नॉट सीइंग दैट, दैट इज डिफरेंट। दिस इज द लोशो कंपैटिबिलिटी टेबल और ये बहुत हिस्टोरिकल टेबल है। सबसे पहले किसी के लिए भी आपने ये चेक करना है। सो ए जो होता है, वेर एवर देयर रिलेशनशिप इज ग्रेडेड एज ए, इट्स एन एक्सीलेंट रिलेशनशिप। A is an excellent relationship. You can have A, B, C, or D. 4 categories can be there. Okay. A will be excellent. B will be lots of similarities, but relationship needs efforts. Okay. So the basic compatibility or lots of similarities will be there, but similarities means they will have common points of interest and common things together, and it is also a good relationship. Again, destiny wise it's a good relationship, but will require mutual management। मतलब भाग्य की तरफ से तो रिश्ता बहुत अच्छा है, लेकिन इंडिविजुअल नेचर तो सबकी अलग होगी, वो सबकी, क्योंकि लोशो ग्रिड अलग है तो नेचर अलग है। तो अब नेचर के ऊपर जो आपको म्यूचुअल एडजस्टमेंट्स करनी है वो आपको बी में करनी होती है, ठीक है। तो एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, म्यूचुअल एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, यू कैन राइट लाइक दिस। सी कैटेगरी जो होती है, इट इज बेस्ट अवॉइडेड बिकॉज द कॉन्फ्लिक्ट्स माइट राइज सो मच that there might be a separation or major conflict, might be, please understand again। भाग्य की तरफ से उनको सपोर्ट नहीं मिलता है। रिश्तों में ये भी बहुत है कि कई बार ना भाग्य की तरफ से रिश्ते बने रहते हैं, वो दोनों अलग होना चाहते हैं, होने होता ही नहीं है, योग ही नहीं होता सेपरेशन का। सो ऐसे में सी में आप बोल सकते हो कि योग है सेपरेशन का या अलग रहने का। अब वो कितने वो है, सपोज लव मैरिज हो सकती है, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग लव मैरिज, मतलब लव है दोनों के बीच में ना, बहुत पैशन है, और इनकी शादी हो जाती है, एंड इट कम्स अंडर द सी कैटेगरी, बिकॉज वो तो एलपीएन से डिटरमिन्ड है, उसमें वो तो कुछ नहीं कर सकते ना, दोनों का एलपीएन जब हमने मैच किया तो वो सी कैटेगरी में चला गया। उसका मतलब ये थोड़ी है कि होगा नहीं आपस में, हो सकता है, कोई भी कैटेगरी हो सकती है। तो सी आपको भाग्य से मिली है, दैट मीन्स अब आप लोगों के लिए इट बिकम्स इंडिविजुअल एंटरप्राइज टू कीप दिस मैरिज गोइंग। Now it is going to be your passion, your willpower, and just your determination. I have chosen this person above all else. I am going to stay in this arrangement। तो वो भी होता है, कभी भी आदमी की फ्री विल को इग्नोर मत करो। इसीलिए हम काउंसलिंग कर रहे हैं ना, इसलिए हम एनालिसिस करेंगे अभी ग्रिड का, क्योंकि हम इंसान को बता रहे हैं कि आप इस तरीके से अगर हैंडल करोगे चीजों को, उसकी ये चीजें आप टॉलरेट कर लो और ये वाली चीजें अपने में चेंज कर लो, तो बहुत हद तक रिश्ते संभल जाते हैं, ठीक है। लेकिन सी में क्या होता है, आसपास का वातावरण जो इन्वायरमेंट है, दैट विल नॉट सपोर्ट यू सो मच, सो इट इज अ लॉट टू डू अबाउट योर पर्सनल पावर टू कीप द मैरिज गोइंग।
कैन बी एनी रिलेशनशिप, क्योंकि सी में तो आपके और आपके बच्चे के बीच में भी सी आ सकता है. सो दैट मीन्स आप लोगों के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन बनी रहेगी, कुछ ना कुछ, जरा सा कुछ बोला अटैक. So you have to be very very tolerant and very very absorbing towards these relationships. जब C होता है थोड़ी विस्फोटक होती है सिचुएशन, ठीक है. और D में हम लोग मना कर देते हैं that this relationship should not be carried out. मतलब D में बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि वो लोग बने रहेंगे आपस में. ओके, सो D में अगर आपके पास चॉइस है किसी के पास मना करने की, तो प्लीज से नो व्हेन इट कम्स टू D. Say the kundlis are just not matching. It will be so much of suffering. It's not worth going for this relationship. और अगर आपका एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में आपके किसी रिश्तेदार के साथ या फ्रेंड के साथ डी आ जाता है, इट इज नाउ शुड बी मिनिमाइज्ड. जैसे मैं एनिमी नंबर्स के बारे में बताती हूँ ना, कई बार आप इग्नोर नहीं कर सकते, वो हैं आपकी लाइफ में आपको लेसन सिखाने के लिए. आप हर इंसान को यू कैन नॉट से कि तुम नहीं हो मेरी जिंदगी में. लोग आते हैं जिंदगी में किसी पर्पस के लिए, तो आप मना नहीं कर सकते. तो ऐसे में आपके कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कोलीग्स हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, आपके कोई रिलेटिव हो सकते हैं जो आपके साथ ही रहते हैं, क्या करोगे? तो ऐसे में यू हैव टू मिनिमाइज योर कॉन्टैक्ट, बिकॉज यू नो समवेयर दैट इवन इफ आई मेक ऑल द एफर्ट्स, somewhere no, this relationship is not meant to be. Okay, so you will not get anything good out of it. So try to stay away or try to minimize. Okay, उसका रोना नहीं रोना, उसको मिनिमाइज करना है, क्योंकि वो भाग्य से ही आप लोगों का डी कैटेगरी में चला गया. अच्छा, अब हमें क्या करना है? तो ये हमारी स्टेप नंबर 1 होती है मैचिंग की. ABCD इसको लिख लो ऊपर. इसके हिसाब से आपको ये पता चल गया कि आपको अपनी काउंसलिंग कितनी इंटेंस रखनी है. ए में क्या होगा ना, मोर और लेस द पीपल विल वांट टू कम टुगेदर बिकॉज ए इज वेरी गुड. बी में यू हैव टू काउंसिल देम. सी यू हैव टू वार्न देम आल्सो कि भाई इफ यू डोंट लिसन to what I'm telling you and you don't do the remedies or you don't be careful of this, you might break up. And D, you have to say no. So once you've got this thing sorted out, now you come back to individual grids. Come back to the individual grids like this. ठीक है, बॉय की और गर्ल की. अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में हम लोग इस तरीके से इनकी मैचिंग करते हैं. मैचिंग का मतलब क्या होता है? अब हम लोग करेंगे व्हाट इज नोन एज द एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज. एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज. हर नंबर अपने में एक एनर्जी कैरी करता है. व्हेन two persons are coming together in a relationship or a partnership, what are the individual energies they are bringing to the table? What am I bringing to the table? Okay, that's important.